Welcome back to my YouTube channel Learn Information Technology. Today in this video I will tell you about the topic that is table. How we can insert a table in MS Word. There are several options by which you can add a table in MS Word. That is, insert a table using grid-like structure. I will tell you in the practical part what is the grid-like structure. Next is how we can insert a table using dialog box. And next is how we can draw a table. There is also two options are available in MS Word. That is how we can convert any text written into a table and vice versa. That is convert table into text. Now, one question arises. What is table? Now guess what? Where you have drawn table-like structure? Yes, in schoolwork, or you can say in copy. In every subject you will draw a table-like structure. Yes, in index. In index you will draw a table-like structure in which serial number are there, topics are there, page number, date, and remarks are there. Means in index you are drawing table-like structure. Similarly, in differentiation you will draw a table-like structure and so on. Means you know कि what is table. Means table कहाँ बनाते हैं you are very well know. Now the question arises, what is the definition of table? So table is containing rows and column. Means what is row and what is column? Basically, row means a horizontal section in which you are written any text. What is column? Column is a vertical section, or you can say vertical strip present in a table, that is called column. Now, intersection of rows and column makes the cell. It's completed in definition of table. Because if you have never described the word cell in table, its definition is incomplete. So, I summarize it, the definition of table, that is a table containing rows and column, and the intersection of rows and column makes the cell. So, table containing both rows and column. So, let's move further towards the first topic, that is insert table using grid-like structure. Now, basically, first is how we can insert a table. Means किस tab पे click करें, उसके बाद कौन से command पे click करें so that we can insert a table in MS Word. So, for inserting a table in MS Word, you have to click on the insert tab because you are inserting it. That's why you are switching towards the next tab, that is insert tab. I have already told you about the home tab. I have already explained many groups of the home tab. काफ़ी लोगों ने मेरी ये वीडियो पहले की देखी हुई है, तो उनको पता है कि मैंने होम टैब पे कितनी सारी वीडियो बनाई हैं. So, if you haven't watched that video, don't worry, I will provide the link in the description box as well as in the I corner. Now, let's move further. So, you have to insert the table. So, that's why you are clicking on the insert tab. Now, in the insert tab, you have to click in the tables group. See, tables group are there. So, basically, these are the group that is written in the bottom of the particular ribbon. So, you have to click on the tables group. In the tables group, you will click on the table command. Now, in the table command, when you click on the table command directly, you will see this structure. See this. You will see this box type structure. This is called a grid-like structure. Now, you will see there are several boxes are there. Before this, I have already told you what is table. A horizontal row, this row means this section I am dragging the
mouse over there, this is the row because this is the horizontal section. Means जो भी horizontal में एक line आप बनाते हो, that is called row. Vertical strip, it is called column. See, these are many vertical strip. So these are columns. So rows are clear. Vertical line means columns are clear. So what is the cell? See, these row and these column are intersect at one each other. Why I am saying means कोई भी रो और कोई भी कॉलम कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है. कैसे? See, this is the first row and this is the first column. See, first row और first column कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? Yes, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स यहाँ पर ये दोनों मीट हो रहे हैं. See, पहली रो और पहला कॉलम कहाँ मीट हो रहा है? इस फर्स्ट बॉक्स में मीट हो रहा है. That is called cell. अब let's move further towards the second column. See, second column और first row कहाँ मीट हो रहे हैं? Means इस सेल पे. So सारे ये जो बॉक्सेस बने हैं, these are called cell because हर एक कॉलम किसी ना किसी रो से इंटरसेक्ट कर रहा है. Similarly, हर एक रो किसी ना किसी कॉलम से इंटरसेक्ट कर रहा है. So each are called cell. सारे ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हैं, these are called cells. Now, I hope you understood what is rows, column and cells. So, for inserting a table, click on the insert tab. In the tables group, you will click on the table command. For this, you will suppose मुझे 3 columns और 2 rows insert करनी है. So 3 columns means vertical strip. So 1, 2, 3. Or how many rows you have to insert? 2 row. See, 2 row, 3 column means 3 by 3, 3 cross 2 की मेरी टेबल बनेगी. Now, I will tell you more about in the practical part how we can insert. मैं live demo भी दूंगी आपको. So don't worry about it. So I hope you understood कैसे हम इस फॉर्म में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं. Now let's move further towards the second topic, or you can say second part. Insert a table using dialog box. Now one question arises in your mind. What means इस फॉर्म से मैं टेबल इंसर्ट कर सकती हूँ, सो मैं ये न्यू मेथड क्यों पढ़ूं? आई नो आपके माइंड में आया होगा, but the answer is now. Let me told you one more thing. See, 1, let's count the rows and column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, rows count करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Means there are 8 rows and 10 columns. Yes? Now, guess what? Suppose if you want to insert a table in which you are making your class sheet, means you can say attendance sheet you want to make. So, there are 50 or 40 students, but there are only 10 or 8 rows or column. Now you understood. Now, listen. If आपको अपनी क्लास की एक रिकॉर्ड शीट बनानी है और यू कैन से स्टूडेंट लिस्ट बनानी है, सो इन दैट देयर आर मोर स्टूडेंट. इसमें तो देयर आर लेस नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम. सो वी आर रीडिंग दिस मेथड फॉर दिस दैट ओनली, बिकॉज सपोज यू वांट टू इंसर्ट रोज 50 एंड कॉलम 10 कॉलम तो यहां से हो जाएंगे, बट 50 रोज तो यहां से नहीं होंगी बिकॉज देयर आर ओनली 8 रोज. सो द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज बाय यूजिंग दिस मेथड. दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग बोथ द मेथड. आई होप यू अंडरस्टूड बोथ the why we are using different method for inserting a table. So you
understood why we are reading. So let's understood what is this topic will say. Now, for inserting a table using dialog box. So steps are same. You have to click on the insert tab. In the tables group, you will click on the table drop down menu. इसमें क्या कर रहे थे आप? डायरेक्टली टेबल पे क्लिक कर रहे थे. मीन्स टेबल कमांड पे आप क्लिक कर रहे थे. यू कैन इंसर्ट एनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम फ्रॉम दिस मेन्यू. मीन्स इस ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर से आप इंसर्ट कर रहे थे टेबल. नाउ फॉर यूजिंग डायलॉग बॉक्स, से you are not clicking on this grid like structure, you will click on the insert table command. It is given over there below the grid like structure. So let's read the instruction. Now click on the insert tab. In the tables group, click on the, I am again repeating it, this is the tables group, not the table. S आएगा यहाँ. So click on the drop down arrow of table command. That's why I am saying click on the drop down arrow. This is the arrow. See, this is the arrow. Click on the drop down arrow present in the tables command. Then click on the insert table option. See, insert table option. Now, when you click on this command, you will see a dialog box that is named insert table. आप एक dialog box देखोगे जिसका नाम होगा insert table. Now, इसमें क्या आपको फिल करना है कि आपको नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए. सो मुझे स्टूडेंट की लिस्ट बनानी है. इसमें 50 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट, आप कितने भी बना सकते हो. सो योर प्रीवियस प्रॉब्लम विल सॉल्व, बिकॉज उसमें आप सिर्फ 10 या 80 बना सकते थे. सो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप लिमिटेड ही रोज और कॉलम बना सकते हो. नाउ दिस इज योर विश कि आप इसको चेंज करना चाहते हो. मीन्स दिस इज ऑल अबाउट द विड्थ, और यू कैन से फिक्स कॉलम विड्थ. मीन्स आप जो भी कॉलम में लिखते हो उसकी जो ब्रेथ है वो ऑटोमेटिक अपने आप चेंज हो जाए कंटेंट के हिसाब से, या फिर विंडो के हिसाब से, या फिर आप फिक्स करना चाहते हो कि इतनी 30 है तो 30 ही रहे. 13 चाहे उसमें कम कंटेंट लिखा हो चाहे उसमें ज्यादा कंटेंट लिखा हो. आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज insert table using dialog box. आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है. so this method is suitable because इसमें 10 और 8 का कॉम्बिनेशन है. so आप इसमें छोटी टेबल्स आराम से ड्रैग करके बना सकते हो. सपोज आपको बड़ी टेबल बनानी है, so you will not prefer this grid like structure, you have to prefer this method only. Now let's move further towards the third topic, that is draw table. Now again steps are same. Insert in the tables group, click on the table drop down command and here you will draw a table. Means आपको एक पेन विजिबल होगा जिससे आप अपने अकॉर्डिंग आप टेबल बना सकते हो. Now let's move further towards the practical part of insert table using grid like structure. So मुझे टेबल इंसर्ट करनी है किस मेथड से? ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर से. सो लेट मी ओपन द रिबन फर्स्ट. मैंने रिबन ऑटो हाइड किया है, दैट्स वाई आपको विजिबल नहीं हो रहा है. और मैं ऑटो हाइड कैसे करते हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. नाउ what I have told you already, click on the insert tab. See, this is the insert tab. Click on the insert tab. In the insert tab, you will click on the tables command. See, S is given over there. That's why I am saying tables group. In the tables group, you will click on the table command. When you click on the table command, you will see this structure. Now see what? If I am dragging over only one, see, one cell are there. If I am clicking, I am dragging the mouse towards the right. See, number of columns are there. Why I am saying columns? Because I have already told you vertical strip represent a column. So I have represented. मुझे काउंट करने की नीड नहीं पड़ रही है. Why? Because यहाँ जहाँ insert table लिखा है, see it there. See, यहाँ नंबर लिख के आएगा एक. Watch it very carefully. See, 1 cross 1. Now what you will see, 2 cross 1 means 2 column and 1 row. Now
I have drag one more cell 3x1. यहाँ पर भी देखिएगा यहाँ 3 सेल बन के आएंगे. नाउ मैंने क्लिक नहीं किया था इसलिए वो टेबल हट गई है. now 3x1, similarly 5x1, 6 and so on. There are total 10 columns are there. If I am moving this form means one row, one column. Similarly 2 row, 1 column. मैं 2 कॉलम से लेके आपको एग्जांपल बताती हूँ so that you can easily understood. See, 2 columns are there. Now 2 rows are there, 2 columns are there. 3 rows, 2 column. See यहाँ पर 2 cross 3 लिख के आ रहा है means 2 represent a column and 3 represent a row. Similarly, see मेरी number of rows increase हो रही है जैसे जैसे मैं कर्सर नीचे लेके जा रही हूँ. If I want to insert what I will 3x4. So 3x4. See, my table will appear in which 3 columns are there, 4 rows are there. Now I will click. See, my table will appear here. I have drawn this table using grid-like structure. I hope you understood how we can insert table from grid-like structure. Now second is insert table using dialog box. Means how we can insert a table by entering number of rows and number of columns. So again, click on the insert tab. In the insert tab, click on the tables command. In the tables command, click on the drop down arrow of the table command. Now insert command pick. Now you will not select this because आपको dialog box से आपको insert करानी table. So click on the insert command. Insert table. Now see, ये same dialog box है जो आपको मैंने भी ऊपर explanation के time बताया था. In which you will enter number of columns, number of rows and their width. It is your wish आपको ये change करना है कि नहीं. Otherwise ये automatic ले लेगा. Suppose मुझे 6 row columns and 2 rows. नहीं. Suppose I want to insert 2 rows, 2 columns and 6 rows. Now I will click OK button. See, 2 columns are there and 6 rows are there. I have drawn this table using dialog box method. Now, next is, let's move out the cursor from here. Now, if I want to draw a table, again, click on the insert command, insert tab, tables group. In the table command, click on the draw table command. Now, see, I have told you about पेंसिल लाइक आपका कर्सर चेंज. जैसे आपने ड्रॉ टेबल पे आप कमांड पे क्लिक करोगे आपका कर्सर चेंज हो जाएगा पेंसिल में. नाउ इफ आई वांट टू इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, सी नाउ सी आई एम ड्रैगिंग द कर्सर. जैसे जैसे मैं ड्रैग कर रही हूं उसी के अकॉर्डिंग मेरी टेबल बन रही है. See, if we want to insert one more cell, if we want to draw a line between them, see, this is drawn like this. So, if we want to delete it, click indirectly and right click on it and you will delete it from the delete option. Delete table. If you do not want this, click simply delete table. Now
I hope you understood what is the draw table. Now, basically, this is the draw table command. Now, one more thing. If you want to change their formatting or whatever the content, so select the table. You will see 2 more tabs are visible. जैसे आप एक टेबल सेलेक्ट करोगे आपको 2 नई टैब्स दिखेंगी जो पहले से विजिबल नहीं थी. दैट इज डिजाइन टैब एंड लेआउट टैब. नाउ डिजाइन टैब में आप उस टेबल की सारी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो. लाइक सी, आपको इस टाइप से टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, आप उसकी डिजाइनिंग कर सकते हो. लाइक उसका कलर भी चेंज कर सकते हो, विड्थ, शेडिंग एंड ऑल. सी, इफ आई वांट टू चूज दिस, सी मेरे टेबल का कंटेंट चेंज हो गया डायरेक्टली. शेडिंग, इफ इसको मुझे चेंज करना है, अगेन क्लिक ऑन द डिजाइन टैब. नाउ इफ आई वांट टू अप्लाई एनी शेडिंग और मीन्स कलर लगाना डायरेक्टली, डिफरेंट पैटर्न नहीं चाहिए. आई विल अप्लाई माई फेवरेट कलर ग्रीन. इफ यू वांट टू चेंज इट यू कैन चेंज इट. बॉर्डर स्टाइल आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो और डिजाइनिंग लगा सकते हो उस पर्टिकुलर टेबल के साथ. नाउ इन दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, I have explained this topic using grid-like structure, insert table using dialog box and draw table. I will explain these 2 points in the next video. I hope you understood the content from this video. If you really understood the content, hit the like icon, and if you are new to my channel, please subscribe my channel. Thank you for watching this video. If you haven't subscribed to my channel, that is Learn Information Technology, subscribe it and hit the like icon if you like this video. Bye guys, see you in the next video.